Hi, Charmi. Welcome to Film Mantra. First of all, I'd like to ask you, what was this experience of working on Julmi Savaria? Overall, it was amazing because everyone worked so hard, very creatively. The entire team put their heart and soul into this song. So I loved it, and I'm so grateful to be a part of it. पिछले हफ्ते मेरे को मौका मिला था दिव्येंदु का इंटरव्यू करने का और मैंने उनसे पूछा कि उनका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था। तो उन्होंने कहा कि जब कोरियोग्राफर ने ये कहा कि आपने स्टेप्स अच्छे से कर लिए, गाना बहुत खूबसूरती से बन गया, उनके लिए वो सैटिस्फैक्टरी पॉइंट था। आपके लिए कोई ऐसा एक्सपीरियंस इस गाने का? मेनली तो जब हम एक्चुअली शूट कर रहे थे तो यस, विजय सर ने हमको बोला था कि आप अपने एंजॉय करना है, बस डोंट फोकस ऑन द स्टेप्स कि क्या हो रहा है सही गलत। तो यस, दैट वाज द बेस्ट पार्ट बिकॉज उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया था टू एंजॉय, एंड दैट्स व्हाई इट टर्न्ड आउट सो वेल। गाने को देख के लोगों ने अनुमान लगाया कि किसी फिल्म का गाना है, क्योंकि द सेट इज वेरी ग्रैंड, द कॉस्ट्यूम्स आर लाइवली, पूरा माहौल बहुत अच्छा है। गाने की वीडियो मैंने कई बार देख ली है। आपने जब गाना साइन किया था, डिड यू एक्सपेक्ट दिस टू बी सो ग्रैंड इनिशियली? Not really. I didn't know it's going to be so big. And when I went on the set the first day, मैंने देखा सब and I was in shock. I was like, wow, literally, because I was mesmerized by the whole set and the dancers. There was like the costumes, so much hard work put into each and every detail. So definitely it looks amazing. माशुगा में आपने हनी सिंह के साथ जब काम किया, उसमें आपका स्पाई टाइप एक कैरेक्टर है ना, एजेंट की जैसे, इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट ऑल टुगेदर कैरेक्टर एंड दिस वंस टोटली डिफरेंट। व्हाट वाज दैट चैलेंज? डिड यू हैव टू गो थ्रू लाइक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, गरबा, डांस, ये सब के लिए? जो माशुका सॉन्ग था उसमें यस देयर वाज ऑल एक्शन चैलेंजिंग सीन्स थे, तो उसमें डिफरेंट वाइब थी। यस, एंड दिस इज गरबा, बट गरबा वाज नॉट वेरी चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज मैं खुद गुजराती हूँ। तो मेरे लिए इट्स लाइक एवरी ईयर इट्स अ रिचुअल टू गो फॉर गरबा नवरात्रि। तो आई डिड नॉट फील इट्स डिफिकल्ट, आई एंजॉयड इट अ लॉट। भूमि त्रिवेदी जी के साथ आपने काम किया है, अमित त्रिवेदी जी के साथ काम किया है, कोई उनका फेवरेट सॉन्ग या दिव्येंदु की कोई फेवरेट पिक्चर या उनका कोई प्रोजेक्ट जो आपको बहुत पसंद है? He did an amazing job in Mirzapur, and yes, everyone knows him as Munna Bhaiya. And for him to do this, सबको एक shock surprise मिला कि yes, he can dance as well, and he's brilliant. Definitely, he's a very versatile actor. So it was a great experience working with him. Bhumi Trivedi has sung this song so beautifully, and even her other songs, Ram Chahe Leela, and all of them, fantastic. She's an amazing singer and a performer as well, because she was a part of the video. So she's multi-talented. And Amit Trivedi sir, obviously, he's a legend. Like his composition, even he has featured and he has sung in the song. So he has done an amazing job. I'm sure everyone loves him, and together everyone collaborated and did an amazing job. By any chance, do you also sing? No. Okay. I have a rapid fire round with you. Okay. So the first question is, one fashion trend you absolutely love? Saris. Okay. A Bollywood actor you'd love to work with? Varun Dhawan. Okay. You've already actually worked with the superstar हनी सिंह के साथ already काम कर लिया है. Yes. Any director that you'd like? संजय लीला भंसाली सर। मैंने पहले भी सुना था संजय लीला भंसाली। जब इस सेट पे आप गए जुल्मी सावरिया के, आपको थोड़ा याद आया कि ये सेट देख के ऐसी सेम सिमिलर वाइब्स आई मुझे। यस। A travel destination you'd love to go to? None that I can think of immediately, but maybe Tokyo. Okay. Yeah. Any song that's on your playlist? Right now, Julmi Savaria. Okay. Day and night, it's on my mind. So अब बहुत practice करनी पड़ी होगी ना इसके लिए आपको? Yeah, actually इतनी practice भी नहीं, because we had just 2-3 days before the shoot and we had to quickly wrap it up, and we wanted to do it before Navratri obviously. तो इतना भी time नहीं था, but still it went smooth, it went well. When I actually work on a project and you're actually working with an actor like Divyendu, जिनका already charm बहुत ज़्यादा है, fan following बहुत ज़्यादा है, who actually broke that ice, कि मतलब because obviously ये एक तरह से love song भी हम देख सकते हैं, गरबा तो है but love song नोक झोंक भी दिख रही है इसमें। Right. Comfortable कैसे हुए मतलब दिव्येंदु के साथ आप काम करने के लिए? Actually उनका experience इतना है, he's so good at his work that it just happened naturally.
So we did not even have time to, build that chemistry. Whatever happened, it was just on set, and just one day prior to the shoot, we had the rehearsal. Were you initially nervous? Not very much, because to be honest, जो set पे vibe थी very positive, very warm, very welcoming. I mean, even the choreographers team, they were so sweet. So I had a blast. Okay. One word to describe your experience on Jugni Savaria. Exquisite. Okay. Your go-to comfort food. Pasta Okay. One Gujarati dish that you cook by yourself. by myself, probably thepla. Okay. I can, yeah. Okay. What takes longer for you, dancing or maybe getting ready for a shoot? Getting ready for a shoot. Okay. Yeah. When you're on the set, you're just quick. Yeah. That's it. I had a wonderful time talking to you. But जाने से पहले, if you could talk to your fans, एक last message, upcoming projects के बारे में कुछ. Upcoming projects, I'm still open. Let's see what comes my way. And I would like to wish everyone happy Navratri, and hope you guys like Julmi Savaria, and we loved creating it.